JCI. JCI Tavira once again welcomes you to the next stage of this mega drive, mega anti-malaria drive. And now friends, with the whole team JCI Tavira, we are into another rural and tribal, better to say, an area very interior to this place, Atavira, and we are in a place where there is just 10 families stay together, and we are going to give you one of the best example of how malaria can be so deadly and become a reason of grief for many people. And here for this occasion, actually, we have one important special person on this occasion, a doctor who has encountered and seen every day a number of patients. You can see these are the families. Actually, you can see the financial status. These 10 families do not have a small piece of land. They go to work for other places, and in some critical situations when they are affected with malaria, what must be going on with those families? So on this very occasion, so please tip it down. Like on this very occasion, actually, I will ask. We also you can also see a widow, victim of that such dangerous disease, malaria. So to go into brief, actually, I would like to request Dr. Ravi Kumar ji. He's a welcome sir on the show, on this program. Thanks for your cooperation and your valuable time for this. Actually, मैं आपको पूछना चाहता था कि actually what is the status of malaria and the family the conditions here as far as malaria report is concerned here. So please sir. यहाँ पे जो गांव में जितना लोग रहते हैं तो यहाँ पे मच्छर ज़्यादा होता है, मतलब मस्किटो नेट नहीं होने के कारण लोग खुला में सोते हैं तो रात को मच्छर जाते हैं। सुबह इन लोग का सिम्टम भी पता नहीं चलता है, बुखार होता है, 2-4 दिन बुखार होने के बाद तो लेट से भी आते हैं, जिसके लिए डायग्नोसिस डिले हो जाता है। तो इसी कारण इनका ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब यहाँ पे डायग्नोस्टिक अब डॉक्टर लोग का फैसिलिटी न होने के कारण तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। फर्स्ट हम लोग का ये ट्रीटमेंट से पहले मेरा हिसाब से प्रिवेंटिव जरूरी है मलेरिया के लिए। तो प्रिवेंटिव मलेरिया के लिए क्या है, तो प्रिवेंटिव हम लोग को बोलते हैं पेशेंट लोग को कि आप लोग मशारी लगाइए, मच्छरदाना लगाइए और मस्कीटो कॉइल लगाइए, ये सब। लेकिन यहाँ पे मस्कीटो नेट नहीं होने के कारण ये सब प्रॉब्लम्स हो रहा है। हम लोग प्रिवेंटिव करने के लिए ये अच्छा जैसे तरफ से अतावरा जैसे तरफ से एक अच्छा प्रोग्राम एक तो कंडक्ट किए। तो रिसेंट एक केस हुआ यहाँ पे मलेरिया के लिए, एक डेथ भी हो गया। तो इनका बेटा है वो मलेरिया में यहाँ पे 10-15 दिन बुखार हुआ था, उसके बाद उनको लेके गए बुल्ला में एडमिट किए थे। वहाँ पे किडनी रेनल फेलियर हो के वो पेशेंट डेथ हो गया। तो बाकी चीज़ उन्हीं से पूछ लीजिए आप, डायरेक्ट उन्हीं से पूछ लीजिए क्या होगा। So thank you very much for the statistics. Sir, just final concluding, how many number of regular malaria cases you encounter? Patients come to you because this is your area, you have seen many things. So please. So out of 100 patients, कम से कम 20 तो डेली निकल जा रहे हैं, 20-30 तो। Just imagine, there are every day 20 malaria patients, and out of them, every 6 months, there are definitely 3 or 2 deaths are available. So this is the drastic situation in the interiors of this locality. And on this very occasion, we have also our Joint Director Program, B.B. Chaudhary ji. So in everybody's presence, I would like to ask some question, the status of this family members. This, तुम्हारा नाम क्या है? Venudhar Kumar. He has lost his son, and it's such a painful situation. And he has his documents. He was showing us his documents and all prescription medical. And in the last stage, they could not do anything, and they lost to malaria. So this is the family situation. कहाँ हला कहाँ ठीक हो? उड़िया न कोई दियो? इन जे प्राइवेट डॉक्टर जैसे वाले दिखा लो मलेरिया टेस्ट कला कोचा कहता क्या दिन साथे अटे रखल न आरो झड़ा परिसरा बंद है सर पर बुरला के न सना कोरे बाई दिन रखल न आरो सेनु थिले सेनु पता है उड़े बेबी मासे ऊपर ठीक ताकर केतेरा पोजियो जुड़े। Right. So this is the situation. His son was in the hospital for more than 20 days, and after struggling and suffering, they lost him. So we hope such things never come up, and just as a part of a small drive, as a part of the dream project of National President Sir, with the whole JCI Atavira team was here, and we are moving ahead into small tribal areas in this hilly areas where we cannot reach by normal bikes or traveling anything, due difficulty in transportation and all, and the same difficulty they face to reach hospitals and for proper medication, and they lose life and all. So we hope with such help and all, in future they will get the better facilities for to get rid of all these things. And let's go on to the next location. केंता व्यवहार करबो काना सर माने कहबे से सबे तुमे
मेडिकेटेड ना मेडिकेटेड এটা মশারি মানে বুঝলো কি এটা পুরা ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ମିଶାଇକିରି ହେଇଛି ମେଡିସିନ ପୁତରେଇକିରି ଏଇଟା ବାହାର କରିକି ଆସିଛି ବୋଲେ ରାତିର ବେଲା ତୁମେ ଯେନ୍ ଶୋଇବ 7-8 ବଜେ ମଶାରୀ ଲଗେଇ ଦେବ ତାପରେ ଶୋଇବ ସକାଳୁ ଖୋଲିବ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲ କି ଆଉ ମଶା ଟଚ୍ କଲେ ବି ଏଇଟା ମରିଯିବେ ଏଇଟା ଏନ୍ତା କିଛି ନାହିଁ হ্যাঁ আর তোমার লাগি অসুবিধা কিছু না হয় আর বাকিটা তুমি যেন মশা যেটা না করবে এটা দেখব 2 নম্বর জিনিসটা পানি সফা সুতরা রাখব যেন পানি জমা যাইতুবা সফা করব হ্যাঁ এসব যত্ন মানে পানি ফুটাইকি পিব এসব জিনিস মানে তেল মানে টি লগাব যেটা মস্কিটো কয়েল বি লগাব হ্যাঁ तुम्हें यूज व्यवहार करबो यार से देबो नहीं आ सोई लुकी के रखबो नहीं रखी किछ लाभ ना नो जीवन बोले जो ऊपर तुम देखु छो रखना क्या लाभ होची डॉक्टर बाबू बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको Dear friends, let's have an interaction with one of the patients. Right now she is suffering with malaria and this is again the same place from where we just visited now. And we also have the patient at the same time a doctor who is treating, Dr. Ravi Kumar and the project director. Sir, please, I just, please have interaction. What is the situation and since how long she has been? कितने दिनों का तुम कहना लागू छे का डॉक्टर को भर करिको? सोमवार दिन से 5 दिन तक ज्वर हैला ତାପରେ କାଁ ହେଲା 5 ଦିନ ଜ୍ୱର ହେଲା କେନ ଦେଖେଇ ଦେଲ कांडरा नु देखिथिली ତାପରେ କାଁ ହେଲା ତମର ଅସୁବିଧା କାଁ ହେଲା ती ବାନ୍ତି ହେଲା ତାପରେ ପରିସ୍ରା ଯାଉଥିଲା नहीं ପରିସ୍ରା ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ବୋଲେ ତମର ରିପୋର୍ଟରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ବାହାରିଥିଲା ତାପରେ ଏବେ ବାନ୍ତି ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଆଉ ପରିସ୍ରା ଖୁଲିଛି କି हां कितने दिन होला? କେତେ ଦିନ ହେଉଛି ଏଇଟା ଆଜି ତମର 3 ଦିନ ହେଉଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଇକିରି ଆଚ୍ଛା ଏବେ इंजेक्शन सब नौच ये जो आप देख रहे हैं इसका इनका एज हो रहा है 24 ईयर्स ये अभी कॉलेज में पढ़ रही है इनका बुखार हुआ था 3-4 दिन तो यहाँ पे लोकल डॉक्टर को दिखाए थे उन लोग बिना टेस्ट का एक टैबलेट एंटी मलेरिया दे दिए थे उसके बाद इनका तो उल्टी स्टार्ट हो गया और पेशाब बंद हो गया था तो इसको क्रॉनिक एक्यूट रिनल फेलियर में जा रहा था पेशेंट मलेरिया होकर एक्यूट रिनल फेलियर जो किडनी को खराब करता है तो उसके बाद इनका टेस्ट करवाए टेस्ट करने के बाद जो जो रिपोर्ट निकला उसके हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट किए अभी आज का दिन में ये उल्टी बंद हो गया पेशाब भी जा रहा है पर डे अभी जा रहा है 1 लीटर 800 ml से 1 लीटर तक जा रहा है तो मिनिमम 1.5 to 2 लीटर जाना चाहिए अभी फीवर भी कम गया उसका तो ये भी मलेरिया केस है तो मेरा बोलने मतलब यहाँ पे ज़्यादा ये जो गाँव में मलेरिया बहुत हो रहा है तो इसके लिए प्रिवेंटिव हम लोग को चाहिए तो प्रिवेंटिव के लिए क्या करना है क्या नहीं हम लोग एक डिस्कशन किए थे अभी भी तो अभी जो अतारे से अभी जो आए तो इन लोग मस्कीटो नेट सब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इसका वजह से हम लोग को थोड़ा राहत मिलेगा क्योंकि प्रिवेंटिव हम लोग मस्कीटो नेट लगाने से तो थोड़ा मलेरिया कमने का चांसेस रहता है तो प्रिवेंटिव कर सकते हैं तो इसी मतलब प्रोग्राम का एक हिस्सा था इसीलिए हम लोग को ये केस मतलब प्रेजेंट किया हम लोग এটা লগে দিন হ্যাঁ এটা লগে গেলে শুইব হ্যাঁ ওকে Sir, please. Last time. Done, sir. So this is the situation. Here, she is a student. This is one of the example. She is not going to college for the last 1 month and she is suffering. And right now, the examination time and she is not able to appear for exams also. People are not only losing their life, but also they are losing their career also. So we hope with the small drives and with the initiatives by all people of the Junior Chamber International, we will make it a very big drive. Thank you very much. अगर दिया Sir. Yes, sir. This is Khadiapada of Daharupada, an interior tribal village of Atavira, JC Atavira area. These are the families from where, from the last 3 months, more than 4 have been malaria patients and they are curing right now. And this is the live examples of how malaria has covered and made almost all people a victim of this drastic disease. Just move on and see the smiles. That is the result of
So these are the smiles JCI expects from the people, united to impact, to spread smiles. Yeah, చెప్పండి సార్ ఏ లొకేషన్ పేరేంటి ब्रिज अमलीपल्ली okay so this is another place the same situation Amlipali, and there are two families who are again the same examples in the last 6 months. They have also won similar examples that I don't need to explain, you can easily understand. So JCI Junior Chamber International, the team with all the past presidents and recognized people of this location, we are here to for this anti-malaria drive, and this time we are doing it both as an anti-malaria drive and anti-malaria awareness campaign, where Dr. Ravi Kumar sir is explaining how to use those nets, at the same time what to do to prevent malaria, because we cannot afford to get rid of malaria. Thank you very much.